Hello and good evening. So let's begin with today's session. Look at the first question. Consider the following statements. The first statement says, it is the highest peak in Southern America and the tallest mountain outside of Asia. Second statement is, it is situated in Argentina's Andes range. Third one is, the mountain is believed to have its origin in the volcanic activity, but it is not an active volcano. The above mentioned statements refers to what? It refers to Mount Aconcagua, and it is situated in the Andes range of Argentina. And why we picked up this question? There is a strong reason. Recently, a techie from Tripura climbed to this summit, Mount Aconcagua in Argentina, right? So look at the explanation part. You can see here, a techie from Tripura recently climbed to Mount Aconcagua, the highest peak in Southern America, on January 7th, right? Though not a volcanic today, it is believed to have been formed through the tectonic uplift with ancient volcanic influences. Clear? Now look at the Andes states. क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि एंडीज स्टेट्स पूछ लेता है. डू रिमेंबर दैट एंडीज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड. सो दीज आर द एंडीज स्टेट्स. 7 स्टेट्स हैं सदर्न अमेरिका में जहां से एंडीज माउंटेन रेंज पास करती है. सो फर्स्ट वन इज वेनेजुएला, देन कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलिविया, चिली and Argentina, right? So Mount Aconcagua, it is situated in Argentina. याद रखिएगा, this one is Mount Aconcagua. चलिए, now let's move on to the next question. So look at the question number 2. The Donetsk region, it was in news recently. Consider the following statements. The first one is, the region consists of an undulating plain dissected by river valleys, ravines, and gullies. The first statement is absolutely correct. Second statement is, it is located in the southwestern Ukraine. No, that's not correct. It is situated in the Eastern Europe, in the Eastern European region, in the Eastern Ukraine, and not in the southwestern Ukraine, right? So where it falls in the Eastern Ukraine, not in the southwestern Ukraine. So second statement is incorrect here. The third statement is, the region is connected to the Sea of Azov in the north. No, the Sea of Azov is situated in the south of this region, not the north of this region. So third statement is absolutely incorrect here. Question is, how many of these statements given above is oblique are correct? So only one. Clear? So A for Ahmedabad would be the correct answer. Now look at the explanation part. You can see the map of Donetsk region. So this is the Donetsk region, right? ये Donbass है. And ये रहा आपका Donetsk region. So Donetsk is there, Luhansk is there, right? ये दो important provinces हैं और ये pro Russian states कही जाती हैं और Russia ने इसको यूक्रेन वॉर के बाद से कैप्चर कर लिया है. Understood? And ये आप देख रहे हैं, ये है Sea of Azov. So Sea of Azov कहाँ है? South of Donetsk, not north of Donetsk. Clear? So I hope you guys understood. चलिए, now let's move on to the next question. So the question number 3. With reference to the eco-sensitive zones, consider the following statements. The first statement is, these are areas surrounding the protected areas. Absolutely correct. Eco-sensitive zones are set up under the Environment Protection Act of 1986, right? Second statement is, they are notified by the Ministry of Rural and Development. No, that's not correct. They are notified by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, not by the Ministry of Rural and Development. Third statement is, the concept of eco-sensitive zone was first adopted during the wildlife conservation strategy, which was introduced in 2002. This is absolutely correct. So 1 and 3 both are correct. Question is, how many of the above statements given above, how many of the statements given above is oblique are correct? So only 2 statements are correct. So B for Bombay would be the correct answer, right? So look at this article. Recently, an article was published in the Indian Express. Central Electricity Authority seeks to ease green norms for the hydro pumped storage projects. तो कहीं ना कहीं इको सेंसिटिव जोन्स जो हैं, इसकी वजह से जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के, वो कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं और इसलिए यहाँ पे इसको लिबरलाइज करने की बात कर रही है, राइट? सो डू रिमेंबर. चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So look at the question number 4. A country adopts an expansionary monetary policy and inflation rises while unemployment falls in the short run. This situation is best explained by which economic concept? This situation is best explained by the concept of Phillips curve, right? What is Phillips curve? It establishes
relation between the unemployment and inflation. See, unemployment is inversely proportional to inflation. इसका मतलब क्या है? अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कम होगी, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, मतलब एक के बढ़ने से दूसरा कम होगा। तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फेडरल बैंक क्या करेगा? फेडरल बैंक मार्केट में लिक्विडिटी को बूस्ट करने के लिए जो अपने पॉलिसी रेट है, मतलब रेपो रेट, इसको क्या करेगा? डिक्लाइन करेगा। जब मार्केट में रेपो रेट जब कम होगा तो मार्केट में क्या बढ़ जाएगी? मार्केट में बढ़ेगी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने की वजह से जो फर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं लाइक लोगों को हायर करना स्टार्ट करेंगे। इससे कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा? लॉन्ग रन में इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अंडरस्टूड? तो यहां पे आप देख रहे हैं कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में जब भी सरकार, जब भी यहां पे जो फेडरल बैंक है वो रेपो रेट को, पॉलिसी रेट को कम करेगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगा। लिक्विडिटी बढ़ेगा, डिमांड राइज होगी। डिमांड राइज होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लेकिन लॉन्ग रन में अल्टीमेटली क्या बढ़ेगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा। यही रिलेशनशिप यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है फिलिप्स कर्व में। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। नाउ लुक एट द एक्सप्लेनेशन पार्ट, राइट? जस्ट अ मोमेंट. So look at the explanation part. The Phillips curve shows an inverse relationship between the inflation and the unemployment in the short run. When a government follows an expansionary monetary policy, it lowers the interest rates, more the money supply, it boosts the demand, more jobs are created, means they lower the unemployment, but also leads to higher inflation, right? So मैंने यही कॉन्सेप्ट अभी आपको एक्सप्लेन किया आसान भाषा में। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। चलिए आगे चलते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5, consider the following statements in the Indian context. Statement number 1, the inverted duty structure, it adversely affects the competitiveness of the domestic manufacturing. Absolutely correct. Second statement is, the inverted duty structure refers to a situation where the tax rate on inputs is higher than on the finished products. Means क्या है? इसका मतलब है कि जो टैक्स है वो रॉ मटेरियल पे ज्यादा है, राइट? इट इज मोर ऑन द रॉ मटेरियल देन ऑन द फिनिश्ड गुड्स। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से कहीं ना कहीं लाइक कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो हर्ट होगी। तो आप यहां देख सकते हैं कि स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या एक्सप्लेन किया हुआ है? स्टेटमेंट नंबर 2 में एक्सप्लेन किया है द कॉन्सेप्ट ऑफ द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से क्या हो रहा है? यहां पे कॉम्पिटिटिवनेस अफेक्ट हो रही है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग अफेक्ट हो रही है। ये मेन फ्लॉ है हमारे टैक्सेशन सिस्टम का। इसी वजह से इस क्वेश्चन को हमने फ्रेम किया है। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है दैट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर वुड बी ए। बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट and the statement number 2 is the correct explanation for the statement number 1, right? Chaliye, now let's move on to the explanation part. So you can see the explanation here. The inverted duty structure makes the domestic producers less competitive because they pay higher taxes on the raw materials than on the final products. This increases production cost and squeezes the margins, right? So recently an article was published in the Hindu regarding this inverted duty structure. So you need to have knowledge about this. Chaliye, now let's move on to the next question, question number 6. So look at the question. Which of the following documents are presented to the Parliament every year by the Union government under the mandate of the Fiscal Responsibility in the Budget Management Act of 2003? See, recently the annual financial statement was introduced by the Finance Minister as per Article 112 of the Constitution, right? अब demand for grants एंड फाइनेंस बिल, ये सब किसके पार्ट हैं? ये सब कंपोनेंट्स हैं बजट के, राइट? इसमें से दो ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि बजट के कंपोनेंट्स नहीं है। कौन कौन से? द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट एंड द मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, राइट? सो 2 and 3 both are introduced as per the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. क्लियर? तो ये स्टैट्यूटरी मैंडेट है किस एक्ट का? द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द बजट मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2003। याद रखिएगा। विच वन? द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट एंड द मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट 2 and 3। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी फॉर बॉम्बे, राइट? लुक एट द एक्सप्लेनेशन पार्ट. So you can see the explanation here.
ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको इंट्रोड्यूस किया जाता है along with the यूनियन बजट. So macroeconomic framework statement, medium term fiscal policy statement and fiscal policy strategy statement, right? चलिए, now let's move on to the next question. So look at the question number 7. With reference to the Urban Infrastructure Development Fund, UDIF, consider the following statements. The first statement says, it will be used to create urban infrastructure in the tier 2 and the tier 3 cities only. Absolutely correct. The second statement is, the fund will be managed by the National Housing Bank. Again, correct. So UIDF will be established through use of the priority sector lending shortfall. Absolutely correct. See, all these statements are correct here. So how many of the above statements given are correct? Correct answer would be all the 3 statements are correct here. Now try to understand the priority sector lending and the priority sector lending shortfall. See what happens कि जितने भी scheduled commercial banks हैं, इन सभी को, इनफैक्ट फॉरेन बैंक्स को भी अपने नेट क्रेडिट लिमिट का 40% खर्च करना होता है, स्पेंड करना होता है प्रायोरिटी सेक्टर्स में. अब प्रायोरिटी सेक्टर क्या है? जैसे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एग्रीकल्चर सेक्टर, ये सब क्या है? ये प्रायोरिटी सेक्टर है, राइट? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेट्स सपोज कि एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में किसी पर्टिकुलर शेड्यूल कमर्शियल बैंक ने अपने जो मैंडेटेड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है जो 40% है, अगर इसको स्पेंड नहीं किया, लेट्स सपोज सिर्फ 25% ही स्पेंड किया, 15% ये जो है वो स्पेंड नहीं कर पाया, तो क्या होगा? ये जो 15% है ये चले जाएगा एक सर्टेन कैटेगरी में, राइट? और उसका इस्तेमाल फिर किया जाएगा किसमें? उसका इस्तेमाल किया जाएगा यूआईडीएफ में, मतलब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में. अब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंदर जैसे हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, इन सभी एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया जा सकता है. अंडरस्टूड? सो लुक एट द एक्सप्लेनेशन पार्ट. You can see here the correct answer is C, right? So all these statements are correct here. And UIDF is to be managed by the National Housing Bank. And the UIDF is targeted primarily at the tier 2 and the tier 3 cities. ये आगे का statement जो है इसको cut कर लीजिएगा, that is incorrect, right? ठीक है. चलिए, the fund is created by using the shortfall in the priority sector lending of the banks. Clear? So I hope you guys understood, and this scheme was introduced in 2023-2024 budget. So look at the next question, question number 8. Consider the following pairs, regions in news and country. The first one is the Zangezur corridor. No, it is not there in Israel. It is situated between, it is a proposed corridor between Azerbaijan and Armenia, right? Not in Israel. So first pair is incorrect. Second one is Kursk region of Russia. This is correct, right? Kursk is situated in the western Russia. The third one is New Caledonia, Spain. No, that's not correct. New Caledonia, it is an overseas territory of France. And where it is situated? It is situated off the coast of Australia. Clear? Not in Spain. How many of the above pairs are correctly matched? Only one. Clear? So A for Ahmedabad would be the correct answer. Look at the explanation part. You can see the explanation here. So first one is the Zangezur corridor. It is situated between, it is a proposed corridor between the Armenia and Azerbaijan and not in Israel, right? And the second one is Kursk region. So Kursk is situated in the western Russia. Clear? And the third one is New Caledonia. So New Caledonia is situated in where? Off the coast of Australia, and it is a French overseas territory. Chaliye. Now let's move on to the next question. So look at the next question, question number 9. The core inflation is generally less volatile than the headline inflation. Absolutely correct. Why? Because in the core inflation, we do not include the volatile components like food and fuel. फूड एंड फ्यूल क्या है? फूड एंड फ्यूल बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो जो वॉलेटिलिटी है उसको इसमें क्लब नहीं किया जाता है किसमें? कोर इन्फ्लेशन में. सो कोर इन्फ्लेशन इज जनरली less volatile in nature than the headline inflation. Why? Because the headline inflation includes the food and fuel, मतलब volatile components को include करता है. तो this is absolutely correct. So statement number 1 is absolutely correct. Look at the statement number 2. The core inflation excludes the prices of food and fuel, whereas the headline inflation includes them. तो ये explanation हो गया. So statement number 2 जो है, statement number 1 and 2 both are correct, and statement number 2 is reasonable explanation or the justification of the statement number 1.
सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर अहमदाबाद मींस बोथ स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 आर करेक्ट एंड द स्टेटमेंट नंबर 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट नंबर 1, राइट? चलिए, now let's move on to the next question. This is the last question of today's session. With reference to the places in news, consider the following pairs. The first one is Chernobyl nuclear power plant. It is situated in Ukraine and not in Russia. So first one is incorrect. See, Chernobyl nuclear accident कब हुआ था? 1986 में, and it is situated in Ukraine, right? The second one is the nuke city. न्यूक सिटी के साथ क्या मैच किया हुआ है? डेनमार्क कोपेनहेगन. नो, दैट्स नॉट करेक्ट. सी, न्यूक सिटी इज द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड, राइट? So do remember both are incorrect. Which of the pairs given above is oblique are correctly marked? So correct answer would be D for Delhi, neither one nor two. So you can see the explanation here. So Chernobyl nuclear power plant, it is situated in Ukraine, right? And Nuke City, ये देख सकते हैं आप, this is Nuke. तो साउथ वेस्ट ग्रीनलैंड में है एंड दिस इज द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड. ऑल्दो ग्रीनलैंड जो है ये एक ऑटोनॉमस टेरिटरी है, बट इट इज कंट्रोल्ड बाय डेनमार्क, राइट? सो ग्रीनलैंड के डिफेंस अफेयर्स, इसके कम्युनिकेशन, इसके फॉरेन रिलेशंस, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ये डेनमार्क करता है, राइट? चलिए, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड. दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन. दोस्तों, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में. सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद.